हेलो जी, सारे ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਵਕਾਲ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਰਵਕਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 8:30 ਕੈਲਗਰੀ ਟਾਈਮ, 8 PM ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਛੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਆਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਕਾਲ टीम मेंबर हैं, वो बड़े प्यार के नाल इस सेवा दे विच लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सर्वकाल टीवी शो में आप सबका स्वागत है। बड़े प्यार के साथ आप हर रोज इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और मिलते हैं बड़े प्यारे आर्टिस्टों को, और हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है या सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने लेके आया जाए, और बहुत अच्छे जो आर्टिस्ट हैं हमारे, वो आपके सामने आए और आप लोग उनको सुने और अपना आशीर्वाद दें, ताकि आने वाले टाइम में ये जो सेवा है या कोई भी आर्ट है जो इसलिए आगे जाएगा जब हम लोग अच्छे आर्ट को प्रमोट करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वकाल की पूरी टीम की तरफ से। आज के जो हमारे बड़े ही प्यारे आर्टिस्ट हैं, तो बहुत ही उनके ऊपर भगवान की कृपा है। नंदिनी देवनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम स्पेशल तौर पे थैंक्स करना चाहेंगे जनाब इंद्रनील चौधरी साहब, जो कि बड़े प्यार के साथ इस प्रोग्राम को आपके तक लेके आए हैं, और हम लोग घर में बैठ के बड़े आराम से, बड़े मज़े से, साथ में कुछ जो कैलगरी में है, एडमिंटन में है, कनाडा में है, वो सब बड़े प्यार के साथ आप अपना डिनर भी कीजिए, खाने का मज़ा भी लीजिए, और साथ साथ बड़े ही प्यारे और बड़े अच्छे आर्टिस्ट की बातें सुनिए, और बाद में उनका गाना भी सुनना है। तो खाने के बाद चाय ज़रूर पीजिए, ताकि अच्छे से आप बातें भी सुन सकें और बाद में गाना भी अच्छे से सुन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इंडिया में हैं, उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना नाश्ता पानी कीजिए और साथ साथ हमारे बड़े प्यारे आर्टिस्ट की बातें सुनिए, उनकी जर्नी कैसी रही, उनका जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कैसा रहा, और ये सारी बातें हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो जनरेशन, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे बड़े प्यारे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े आगे भी के लिए भी, और उनसे बातचीत सबकी होती रहे। और ख़ास तौर पे आज जहाँ पे नंदिनी देवनाथ जी, बड़े प्यारे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं बड़ी खुशी की एक न्यूज़ है आप सबके लिए। तो वो न्यूज़ है, वैसे तो हम सब सेलिब्रेशन करते हैं, हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं, अपना भी मनाते हैं, दूसरों को भी मनाते हैं, लेकिन जब एक हैप्पी बर्थडे किसी खास पर्सन का हो, तो उस खास पर्सन को भी खुशी होती है, और हमारे जैसे जो उनके साथ साथ पीछे रहने वाले बच्चे हैं, उनको भी खुशी होती है। तो इनके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं आज, क्या बात है। ओजस जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे बड़े प्यारे, बहुत ही प्यारी शख्सियत जो कि सेवा करते हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने की, और उसके साथ साथ उनका जो पैशन है, सारी दुनिया ही बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन बड़े प्यार के साथ जो काम करते हैं उनको मुबारक है। और वो बर्थडे है आज के हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े यंग एक तो आर्टिस्ट हमारी बड़ी यंग हमारे साथ जुड़ी हैं, दूसरे उनसे भी यंग है हमारे साथ इंद्रनील जी, जो बड़े प्यार के साथ इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। तो मैं तो एक बुढ़ा आदमी हूँ, अभी प्रोग्राम से निकल जाऊंगा, तो आप लोग बड़े प्यार के साथ बातें सुनिए, और बातें भी हमारे बर्थडे बॉय की। तो आप बड़े प्यार के साथ इस प्रोग्राम को मज़ा लीजिए, सुनिए, और अपना आशीर्वाद दीजिए। क्लैपिंग जो करनी हो मत भूलिए, क्योंकि जो क्लैपिंग है वो आपके कमेंट्स हैं,
हम लोग बेशक आमने सामने नहीं हैं, लेकिन जो आप लोग कमेंट करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो कोई भी आर्टिस्ट हो, बेशक मैं क्यों ना हूँ या इंद्रनील जी ना हो, दूसरा भी आर्टिस्ट हो, तो जब आप 2 शब्द भी उनके लिए अच्छे लिखते हैं, तो एक आर्टिस्ट को बूस्ट मिलता है। तो आर्टिस्ट कोशिश करता है कि मैं आज जहाँ गा रहा हूँ, इससे अच्छा गाऊँ कल को, उसके बाद और अच्छा करूँ। तो ये प्लीज़ अपनी अपना आशीर्वाद ज़रूर रखिएगा। तो अपनी आशीर्वाद जो देने की समर्था है, उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ज़्यादा कीजिए, ताकि हम लोग इतने अच्छे आर्टिस्ट को सुन सकें, उसका मज़ा ले सकें। तो आज हमारे साथ जहाँ पे इंद्रनील जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके साथ-साथ कल को एक स्पेशल प्रोग्राम है, सितार की कॉन्सर्ट होगी, और सितार की जो कॉन्सर्ट है वो हमारे बर्थडे बॉयज़ के लिए होगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे यंग इतने प्यारे होस्ट हैं और इतने प्यारे वॉलंटियर हैं, उनके लिए जो सितार का स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है, तो वो भी कल को आपको सुनना है। और आर्टिस्ट को सुनेंगे तो आप सच में आप कहेंगे कि जो बर्थडे की कॉन्सर्ट रखी गई बड़ी प्यारी, मुझे बहुत उनका प्रोग्राम जो है पसंद है, तो आपको भी कल को प्रोग्राम पसंद आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जहाँ पे हम लोग जुड़ रहे हैं नंदिनी देवनाथ जी के साथ, वहीं पे आज हमारे साथ बड़े ही प्यारे हमारे कैटेगरी से हमारे एमएलए साहब देवेंद्र तूर साहब जुड़े हैं। सर्वकाल की पूरी टीम की तरफ से हम लोग जहाँ पे मुबारकबाद देना चाहेंगे हमारे इंद्रनील चौधरी साहब को, वहीं पे हम लोग थैंक्स करना चाहेंगे हमारे एमएलए साहब, बहुत ही प्यारी शख्सियत मिस्टर देवेंद्र तूर साहब। और सच में दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ लोग बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। उनमें से हमारे तूर साहब भी एक हैं, जो हमेशा हमारे जो आर्ट को प्रमोट करने में आगे आते हैं। तो आर्ट की सेवा के लिए उन्होंने हमेशा अपना हाथ जो सर्वकाल के ऊपर रखा है, आशीर्वाद रखा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम लोग आगे की कार्रवाई जो इंद्रनील चौधरी साहब करेंगे इस प्रोग्राम की, और हम लोग सब सर्वकाल की पूरी टीम की तरफ से वेलकम करते हैं नंदिनी देवनाथ जी का, और वेलकम करते हैं मिस्टर देवेंद्र तूर साहब का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे जो बर्थडे बॉय हैं उनको विश भी करेंगे, और नंदिनी जी को भी वेलकम कहेंगे, क्योंकि हमारे शहर में कोई गेस्ट बाहर से आए तो कैलगरी का जो एक हृदय है ना, जो दिल है, बहुत बड़ा है। तो हमारे कैलगरी वाले बड़े प्यार के साथ आने वाले गेस्ट को बहुत प्यार देते हैं। तो सर्वकाल का तो काम यही है कि पूरी दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो हर आर्टिस्ट की एक तमन्ना है, अभी एक ख्वाहिश है कि हम लोग कैलगरी जाएं और सर्वकाल के इस प्रोग्राम में अपना टाइम दें और अपनी आर्ट को वहाँ पे कैलगरी वासियों के लिए रखें। और ये बड़ी खुशी है हमारे लिए, कल का दिन बहुत खास रहा। हमारे साथ उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब और तूर साहब को भी खुशी होगी कि कल सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से खान साहब उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब का 102nd बर्थडे सेलिब्रेशन की गई, और उसमें हमारे साथ जुड़े थे उस्ताद फजल कुरैशी साहब, जो कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जी के छोटे भाई हैं। और आने वाले दिनों में उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्दी उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, और ये आशीर्वाद कैलगरी को मिलता है और मिल रहा है, वो हमारे सब के लिए, अल्बर्टा वासियों के लिए, कैलगरी वासियों के लिए, हमारे कनाडा के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतना एक आशीर्वाद मिल रहा है पूरे संसार में हमारे कैलगरी शहर को। और हर आर्टिस्ट की ये तमन्ना हो रही है कि हमें कैलगरी जाना है और वहाँ पे सर्वकाल के प्रोग्राम में अपने आप को प्रोग्राम के लिए रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप बड़े प्यार के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारा आगे आने वाला जो प्रोग्राम है इंद्रनील जी बड़े प्यार के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। बातें होंगी, बातें भी म्यूजिक की होंगी। और हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे बहन जी जो कि टोरंटो से जुड़े हैं, स्वर्णलता जी, थैंक यू वेरी मच भैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। बड़े प्यारे आर्टिस्ट भी हैं, और ख़ास तौर पे ये बात उनमें ख़ास है कि हमेशा से हमें टोरंटो से बेशक हम लोग मिले नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद सर्वकाल के साथ हमेशा रहा है। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे ही आशीर्वाद सबको मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया लिपिका जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से बलजीत सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओजस जोशी जी एडमिंटन से। तो बस अभी लाइन लग जाएगी, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा तो बड़े प्यारे प्यारे आर्टिस्ट प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे। देवेंद्र तूर साहब, एमएलए साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए और अगली जो प्रोग्राम की कार्रवाई है इंद्रनील जी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर इंद्रनील चौधरी साहब। नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या बात है जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, वाह जी आपने एक वाह, ऐसे प्लेटफॉर्म को क्या शुरू बात है, किया है वाह वाह। जिसमें 61,000 से भी ज्यादा लोग अभी सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि क्लासिकल म्यूजिक के लिए एक अनूठी बात है। तो एट दिस पॉइंट मैं सुनीता आलोकन जी, जो हमारे संस्था के को डायरेक्टर हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा, क्योंकि हरजीत सिंह जी पूरे टीम को डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुनीता जी जुड़ चुकी हैं। तो हम हमारी जो एक पारंपरिक स्टाइल से हम शुरू करते हैं, किसी भी चीज को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, वो हम चाहते हैं कि आज देवेंद्र तूर साहब के शुभ हाथों से हो। तो ना ही सिर्फ हमारे एमएलए हैं, वो एक ग्रेट लीडर हैं और आर्ट एंड कल्चर के एम्बेसडर हैं यहाँ क्या पे। बात। तो अभी सेशन चल रहा है कोविड के लिए, आप जानते हैं कि किस तरह की फाइट चल रही है, क्या इमरजेंसी चल रही है। उससे भी उन्होंने थोड़ा सा वक्त निकाल के उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था इसे शुरू करेंगे। तो देवेंद्र चौधरी, आपको सर्वकाल के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत आमंत्रण और धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। और हम चाहते हैं कि आप आज के प्रोग्राम को शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू इंद्रन, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू हरजीत जी। एक बात तो सच है कि जब भी मैं सर्वकाल के किसी प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, चाहे वर्चुअल हो चाहे फिजिकली हो, तो उसके बाद जो मन को जो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट जो भी हमें जो शांति मिलती है, आई कांट एक्सप्लेन इट। हरजीत जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने पहले भी बोला है कि जो आपने हमारे कैलरी का नाम सर्व कला के काल के नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे कुछ दोस्त हैं जैसे मलकीत सिंह जी जंडियाला जी हैं चंडीगढ़ में, और भी मेरे कोई इंडिया में कोई फ्रेंड है, उनकी वजह से जो संगीत के प्रेमी हैं, इंडियन क्लासिकल के प्रेमी हैं, उन्होंने कैलरी के नाम से, जहाँ मुझे जानने से पहले सर्वकाल का नाम आता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपने हिंदुस्तान जो संस्कृति का एक टॉपिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जिसकी एक नींव है, उसको कनाडा में कैलगरी में जो प्रमोट किया है, उसके लिए मैं अल्बर्टा गवर्नमेंट की तरफ से आपका हमेशा ही बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। क्योंकि कोविड की वजह से जब से मैं एमएलए बना हूँ, असेंबली में गया हूँ, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं आपकी संस्था को लेजिस्लेचर में बुलाकर उनका सम्मान कर पाऊँ। पर उम्मीद कर रहा हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको बुलाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में, मेरे इमोशन के साथ आप जुड़े हो। आपका सम्मान करना मेरे लिए ड्यू है। जितना कुछ आपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए कैलगरी को, अल्बर्टा को प्रमोट करने के लिए है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किस हिसाब से मैं आपका धन्यवाद करूं। दूसरी तरफ से नंदिनी जी, बहुत बहुत खुशी मिली मुझे आपकी जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो भी आपकी अचीवमेंट आप शिकागो से लेकर आई हैं, और उसके बाद आप आगे भी बहुत बढ़ने वाली हैं। आप अल्बर्टा निवासी हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत अपने आप को एक, क्या बोलूं कि एक इम्पॉर्टेंट फील कर रहे हैं कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आपको आज मुझे धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन करने का मौका भी मिल रहा है। दूसरी बात, संगीत का लोग बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तब, मैंने हरजीत जी को भी पहले भी बोला है कि इसकी कोई बोली नहीं होती, संगीत की जो धुन होती हैं उसके लिए हम इंडिया से आए हैं। जैसे इंडिया में संस्कृति की ये जरूर बात है कि यदि क्लासिकल म्यूजिक में आप सिंध बंधु को सुने, मेहंदी हसन जी को सुने, गुलाम अली जी को सुने, और बहुत बड़े बड़े जैसे हरजीत जी ने आवाज ली है, इन्होंने इतना वर्चुअल भी, कोविड में जब हम इतनी मुश्किल से गुजर रहे थे, जो प्लेटफॉर्म दिया है, यू कांट बिलीव इट। आई डोंट नो विद लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ यू कैन डू इट। हरजीत जी,
अल्बर्टा गवर्नमेंट से जो भी कुछ होगा मैं आपसे वादा करता हूँ हम आपको प्रमोट करेंगे। और सेम नंदिनी जी, जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी कोई हमारे प्रोविंस का नाम रोशन करेगा, हम उसके लिए आपके साथ खड़े हैं। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब पॉलिटिशियन को माइक मिल जाए थोड़ा सा टाइम तो मिल ही जाता है। एक बात और करना चाहता हूँ जाते जाते, इंद्रनल मेरा एक छोटे भाई, बड़े भाई जैसा, एक्चुअली मेरे से थोड़े से साल बड़ा है। इस मेरा एक दोस्त है, मेरा भाई है। इसने जो कम्युनिटी के लिए जो पार्टिसिपेशन की है बहुत बहुत बड़ी है। इनके माताजी क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा जोरदान डाला है। वो जोरदान को उनको अपने माताजी को उनको लेकर जी आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि he is a birthday boy. So I just want to say happy birthday to you, Indranil. I'm so proud to call you as my friend. Again, thank you very much for giving me this opportunity to congratulate you on this eve. I'm so proud of you. जब भी मौका मिलेगा प्लीज मुझे बुलाया करें। जब भी आपके साथ जुड़ता हूं तो बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू वेरी मच। Wow. Those were the fantastic words of encouragement. और जो सबसे खुशी हुई है आज, एक तो आप जुड़े, क्योंकि इमरजेंसी टाइम में आपका समय मिलना आसान नहीं है। और जो आपकी स्पीच की खूबी रही है, आपने इतनी अच्छी तरह हिंदी में पूरा स्पीच बोला है कि आप इंडिया से सालों साल दूर है, इसके बावजूद आप इतने शुद्ध हिंदी में बोले हैं। मेरे ख्याल से ये पूरे ग्लोबल ऑडियंस को ये मैसेज जा रही है, तो दे विल बी रियली प्राउड ऑफ द हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। एंड हरजीत जी कंट्रोल रूम में नहीं है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन उन्होंने आपके हर एक मोटिवेशनल शब्दों को सुना है, तो आपको धन्यवाद कर रहे हैं। तो बहुत ही thank you is not enough, but still we would like to thank you, and we will go straight to the music part so that you can listen to the great voice Nandini has. तो इसकी फॉर्मेट आज की जो है about 45 minutes की प्रोग्राम है। इसमें करीबन 20-25 minutes की इंटरव्यू है। आफ्टर दैट करीबन 4 लाइव परफॉर्मेंसेस नंदिनी जी का जो हमने शूट किया उसे दिखाया जाएगा। शायद आपके पास समय हो ना हो। ये सर एक मिनट बोलना, क्योंकि रमजान की वजह से ना, क्योंकि उनका 9 बजे जो रोजा टूटना है उसकी वजह से मैं आज फूड डिलीवर कर रहा था जो फैमिलीज हैं। मैं जुड़ूंगा जितना टाइम जुड़ा पड़ा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग ने हैप्पी रमजान शुरू में भी कहा था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं आप। तो पूरे समाज को आपको देखना पड़ता है, यू हैव टू रियली रैशन योर टाइम अकॉर्डिंगली, एंड वी अप्रिशिएट योर टाइम। तो नंदिनी जी, जो फॉर्मेट था कि कि आपसे हम पूछेंगे कि अबाउट योर करियर ग्राफ। तो जैसे एक बार एक ग्रेट क्रिकेटर ने कहा था, सुनील गावस्कर आई बिलीव, कि लेट द माय बैट डू द टॉकिंग, दो ही वाज अ वेरी गुड टॉकर टू। तो मैं चाहता हूं कि चूंकि अभी हमारे साथ देवेंद्र तू जी हैं, तो क्यों ना एक छोटी से आपकी सैंपल वॉइस हमें मिल जाए, ताकि वी कैन स्टार्ट इट विद योर सैंपल वॉइस, व्हिचएवर वे यू वांट। रिकॉर्डिंग बाद में उन्हें हम सुनाएंगे। मैं कब से रेडी हूँ। मैं तो मतलब मैं सबसे पहले सबको नमस्ते मैं ये बोलना चाह रही थी यार। यस, एक्चुअली माय गुड फॉर्च्यून टू बी हियर। मैं तो जब से मैं सर्वकाल के बारे में सुनी हूँ, मैं एडमिंटन में कितना परफॉर्म कर चुकी हूँ, लेकिन तब से मतलब मैं हमेशा से सर्वकाल में परफॉर्म करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कभी भी मैं कैलरी नहीं आ पाई। तो इसलिए पता नहीं कब से मतलब मैं इसको मतलब चाह रही थी कि मैं यहाँ पे कुछ परफॉर्म करूँ, क्योंकि सर्वकाल जो करते हैं ना वो एक्चुअली थैंक यू भी कम है उसके लिए। हर एक कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को लेके आते हैं, और सबसे बड़ी बात इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जहाँ पे मैं मतलब अपने फ्यूचर में मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मुझे इसीलिए बहुत इंटरेस्ट था। तो अभी आज के लिए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये प्रिविलेज है, ऑनर है टू बी हियर। एंड थैंक यू देवेंद्र जी, आपने मेरे बारे में कितने अच्छे अच्छे बातें बोले। आपके बारे में भी बहुत सुना मैंने। आप इतने अच्छे इंसान है, वो सबसे मतलब आपको डिफाइन करते हैं कि आप, इसीलिए आप मतलब एमएलए हो, तो वो बहुत अच्छा है। और मैं दा के लिए मैं गाना चाहती हूँ। तो
You should join with me. It's a special day for Indranil da. तो मैं ये गाना चाह रही थी. बारे बारे दिन आए, बारे बारे दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Indranil da, happy birthday to you. तो यही मैं गाना चाह रही थी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू नंदिनी जी. मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो थोड़ी देर बाद होने वाला था, हमने सीक्वेंस को थोड़ा चेंज किया है, तो थोड़ी आपने जो प्रिपेयर किया है, मेरे ख्याल से जो दर्शक जो वेट कर पाएंगे उनके लिए तो हम आपको एक्चुअल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे अपने दूसरे सिस्टम से, लेकिन देवेंद्र तूर जी को डेडिकेट करके वो तोड़ी, अगर जो कि इंडिया में अभी डे का टाइम है तो डे का जो रागा है, तो उसके ऊपर अगर वो तोड़ी अगर एमएलए तूर साहब को डेडिकेट किया जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी. या अच्छा, हाँ श्योर, ठीक है. मैं उससे भी स्टार्ट ही करती हूँ सिंगिंग. So, if you don't mind, I would like to sing with karaoke. That I think sure can play. We all understand social distancing है, we cannot get the companies right there. Yeah. हाँ, ठीक है. तो मैं कोशिश करती हूँ मेरी तरफ से. अहिर भैरव रागा के ऊपर है. And I hope it's audible.
Wow, that was great. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Well, thank you Thank very you. much. It was so good. I don't know how to explain it. इंद्रन जी, अब मैं माफी चाहूंगा, 8:30 बजे मुझे जाना पड़ेगा. पर जी बहुत जी जी खुशी जी हुई आपके साथ जुड़ के. जी Happy birthday जी again. जी And थैंक यू thank you very much and congratulations on the eve of this success of this program too. Thank you. थैंक Thank यू you so much. थैंक यू Thank you. थैंक यू वेरी मच. यू टेक केयर, कीप Yeah. हेल्दी. Yes. So Sunita ji, आप कुछ पूछना चाहेंगे नंदिनी जी से? Sure, yeah. Please. Hi, Nandini. Very nice to Hi. have you at Sarbakal TV today, and very glad to be with you. Hearty congratulations on your accomplishment. It's a big thing to win Indo-Canadian music icon. How do you feel about winning this award? Of course, it's very much overwhelming, and Mhm. my experience was really, really unforgettable. And I got the award. I was the winner for Indian Canadian Icon and first runner for International Icon. But this is the award. But I would say the reward I got is that I'm connected to all the singers across all over the world, and that is I feel like most special about this event what happened. And then I feel so privileged to connect with them, and then I'm always talking to them. We are always sharing our videos and our creation, and that's something so special to me, and I love that. Wonderful. You're such an inspiration to young talent now. So, any message you'd like to give to our younger talent here? It would be my good fortune if I become an inspiration, and that is kind of my dream, and that is what I feel like again, like best reward in my life if I can be good, inspiration to young generation who are in the field of singing and learning classical. So the message, of course, I would say that never give up. like it's something like sometimes the challenges comes on the way, and you feel like you cannot go with music, or cannot accept the music as your primary career. But I would say to everyone that if there is a wish, there is always a way. So never give up, and always try hard, push yourself a little extra, and of course success will come eventually. Yeah. Awesome message. Over to Indranil ji. Yeah, we would like to ask you. Our opening question was, but now getting a chance to do that because we are very flexible here to change the format anyway. So, what made you choose the career of a performing artist, and especially a vocal artist? Um, I think singing is in my gene. It's like more like emotion to me, and unconditional love, like mother's love, I would say. And it's automatically drives my passion, my dedication, and my motivation and interest in life because I love it. So, and I call this thing like this in my gene because I have been raised in a musical family. So my entire family sings, and that might be the reason it came to me easily, and I'm proud of my family for that. So yeah, and I think mainly my family culture and my family members brought the inspiration for going for singing. So yeah. Wow. Sunita ji would like to ask the Sure, next yeah. question. So, what are your interests and passion Uh, along with music? yeah, so actually, this is something I call it a problem in my life because I have interest in many things. And like, for example, if I listen to somebody playing good tabla, I feel like I should learn tabla. And when I listen to violin, I feel like I should learn violin. So, maybe that's why I believe like sometimes I lose the focus or concentration of one particular topic, which I would be exercising. But again, to name two of the things I do most is the singing and the painting apart from this.
Awesome. Okay. How has your family influenced you? What has been the role of your family in your musical career? Actually, it's totally because of my family, I would say. Let me share a story which I heard from my mother. And like, I used to get up in the morning by my mother's riyaj. So she used to practice singing in the early morning, let's say 5 and 6 a.m. And I used to sit next to the harmonium and listen. Actually, I never listened to it. I used to sit there just to disturb my mother. So sometimes I used to put my fingers inside the harmonium below, or on the covers, or inside on the keys to disturb. But my mother never used to get disturbed or irritated. So she used to encourage me to sing with her. And like I was so bad. I used to make faces, and I used to do like this in front of my mom just to irritate her. And actually, that's when I started singing, and she kind of taught me how to do riyaj. And then, like, she said that I could sing even when my speaking was not that so clear. So again, it's my mother who is the inspiration for my singing all this. And that's how I started singing. Yeah, did I miss any So how question? so sorry. So how and why did you choose to explore Indian classical music? Who are your role models or mentors? Are you still learning, and what is your career path going to be? Okay, so I explained how and why did I choose Indian music. Again, like maybe like I was blessed enough to. I have been blessed enough to learn from many gurus in my upbringing, and the more I have known about Indian classical music or Indian singing, the more I became interested. And mostly I grown up by listening to Bollywood music, and Bollywood is very much inspired by Indian Hindustani classical or Indian classical music. So maybe that's the main reason because I was mostly oriented towards Bollywood, and maybe that's the reason that I became interested in learning Hindustani classical music. And like, who are my mentors? And my mentors are my parents. My mother is my main inspiration for singing, and my father is my uh, the daily motivation. So I cannot stay without talking to him every day. Wow, very good to know the family support. So, just as Sunita ji asked you about your experience in winning this great award, so tell us if you can summarize the experience. What kind of award is this? How can the new generation look forward to applying for this award? And what was your experience? What happened in Chicago? How did you reach Chicago? And what was the final outcome of it? Yeah, so International Indian Icon, in short, 3 it's a global platform with immense possibilities for the singers, like mostly Indians who are living outside India, to showcase their talents not only in singing but also in dancing, let's say, yeah, instrument playing, or in various art categories. And in our season in 2018, this semi-final round and final round held in Chicago, USA, and about 137 singers were selected for the semi-final round, who were from 5 different countries. And there were episode production for 5 days, which was aired on GTV US and Canada. And Bollywood singers and composer Orgopur Mukherjee and Baishakhi ma'am were the judges for the singing. And we were about 23 who got selected for the final round. And I was placed to win the Indian Canadian Icon and the first runner-up for the International Indian Icon.
So again, I must say that it is something a global platform, and for the singers or the aspiring singers who are outside India, I think this is something which everybody can, at least try and to make some recognition in their field. So this is something I would say more than recognition. I am connected to the singers all over the world. So that is what I find most special about it. Yeah. Wow, excellent. Sunita ji. So, Nandini, you have the experience of performing both in India as well as outside India, in US and Canada. What's the major difference that you have noticed or you had to adapt to while performing to audience in India compared to outside? That's a good question. I have been here for a long time now, and I'm mostly performing here. It's like I performed in India in 2020 February last, so that was my last performance, and I've only get a few chances to perform there because of my work here. But of course, the platform is different. And but like music has no language, and I'm not Wow. surprised to see that when I see Canadians, they love to see Bollywood music or Indian classical music. Even for me, like when I listen to let's say Spanish music or Persian music, I feel like I don't really need to know the language because I'm already connected to the music, and that is something like I'm emotionally connected. I can connect my heart to it. So that I think everybody, I mean, same to everyone for music lovers, and that is something makes easier for the artist or performing artist to present their culture or their song. And North America is very much reaching across culture, and I don't find it is much more difficult here to sing Indian music. Yeah. So Nandini ji, there is a saying that perhaps the Indian classical music is an extinct art. The other part of the debate is Indian classical music is here to stay. So what are your thoughts and what are your comments on it? I actually don't think it's kind of extincting or is losing audience. Because I believe there would always be some part of the audience who are, fond of listening to Indian classical music. Today, the new generation is more about the trend, and I would agree that the new generation is prone towards the like Bollywood songs, the party songs, and they do go deep inside the classical music, or they're not much inspired. But I think one day this will change because again, I feel like if you want to be a good, I mean, to me, if you want to be a good vocalist or good singer, it's very important to know the emotions of different ragas. And Indian classical music has that magic, and Wow. that's why I believe like new generation would be much more interested if this kind of music is being forward more. Wow. Excellent. So now kind of a challenging question we have for you. It's about there seems that there are special challenges for a women artist or women in any field where it is leadership or wherever you go. For example, India is the biggest democracy in the world. It has only one chief minister who is a woman. The artists also, they are equally good artists, but if you see how many artists are actually able to come up and perform, are much smaller in percentage than in terms of male counterparts. So what is your thinking about that glass ceiling? It's a kind of an artificial ceiling. When you look up the sky, you see there is a clear sky, but actually there is a glass ceiling which there is a challenge to break free. So what do you think about those challenges as a female artist, and how do you counter it? Okay, so
I feel like challenges are like always there, and actually it's not there. So it all depends on how you take it, how you take the challenges, and it may exist and simultaneously it may not exist. That is important that your perspective of looking at it. And like for me, from my childhood, I have been very ambitious and kind of jiddy girl. Like, करके दिखाना है, जो भी करना है. As it was my thought, and then when I was challenged with my studies in the 10th grade, and then I went for engineering, I literally found it hard to continue singing, but I challenged myself that I will be practicing singing, and even I challenge myself now that I will be practicing singing for at least 1 hour every day. And like I do that. So that is sometimes you need like some kind of balance and proper management of time. But it is something not impossible to me. And I feel like, so about the glass ceiling, again, glass ceiling only exists as a barrier if you think it is a barrier, or it doesn't exist if you think that it doesn't exist in your life. So I also take it like that, and to me, glass ceiling doesn't exist, and I don't believe that anything can be barrier in my life. And also, like, at least I didn't let it happen that my studies became a barrier for my singing, or my singing became a barrier for my studies. So that's what like my challenge on me. Well, that's a bold and fantastic answer. And I will request Sunita ji to ask the next question. But before that, for the benefit of the listeners and viewers, let me tell you that perhaps many of you know Nandini as a fantastic artist, but probably not everyone knows that Nandini is also a trained mechanical engineer and from University of Alberta. Though she looks to be and she's actually very young, but looks to be a grade 12 student. But she has completed her PhD in mechanical engineering from University of Alberta. So I feel amazed at how you can wear so many hats, and those are very different career paths, being an artist and being a professional engineer in a very competitive scenario. So how you manage time, and at the end of the day, how would you move forward? Would you choose one of the two, or would you keep both the careers together? And if so, how would you accomplish your final goals? That's a difficult question for me. And yeah, actually, this is something I deal with every day in my life. And um, like PhD is kind of a training, and I have learned so much from my PhD that like I got the good training, and I have trained myself in such a way. I feel like nothing is more challenging now. Because I have done PhD, and it also like evolved my character, and I have known myself more. So that is most important achievement I have done in my life till now. So like I believe that higher education is of course needed, and I also value the importance of education. When I was in 10th grade, I got selected for Saregama, and I asked my father that I want to go, I want to sing, and I want to go to the TV. And my father suggested not to go because that was the 10th board exam, and he was kind of inspiring me at that time to go for studies. And he said that you can do singing even later when you complete your education. That day I listened to my father, and I think I made the right choice. And today I can realize that after completing my education, I feel I actually realized or experienced the value of education. So again, I would say that education is most important, and nobody should be avoiding that. Do as much as you can. And how I manage again, as I said, that sometimes I do studies more than singing, and singing more than studies. So vice versa, depending on my deadlines and my performance.
Like sometimes even I do sing, even while cooking or in the shower. And I must tell you one thing. So I heard of, like, you have heard of one riyaj called Kharaj riyaj, like the lower octave riyaj, which strengthen your bass and also like increases your range. So I do that while taking shower, and that even I can do even while I'm making a presentation. So I feel Wow. like this is how like everybody can do that. If you want to do, you can do that. It just needs some strong willingness. So that's what like in me, and I believe that is driving my way in my life. Yeah. Wow. Wow. So you have so much of background in classical music, and now you're into singing Bollywood as well. How did it? How did the transition happen? Actually, I'm singing Bollywood. It's not like that I'm singing classical music much, but I would love to sing classical music much, and I'd love to perform others like my gurus. So I'm looking forward to that day. But the transition is like I feel because I learned classical when I was till grade 9. I learned classical Hindustani classical, and then for the 10th board exam, I had to stop learning. And after that, I went to engineering, so I couldn't continue learning. But like it was always in my wish to continue learning and then go for even higher, advanced learning. And that I started now, actually, after completing my PhD. So this is, I feel like also like this lockdown came to me as a blessing because I could invest more time to it, and that's how like I know that I am if I do practice, I will improve a lot, and that's what I believe. Like everybody can be a good singer. Like not everybody. I must say that sometimes if you have some talent from by born, it helps to polish in sooner. But like if you want, you can be a good singer with proper training and practices. So that transition is I don't know when happened, but it was always there. Oh, nice. So how are you, how are you contributing to the future generation and advocating the outreach for the Indian music? Hmm, how am I contributing? I would love to contribute, and um, Say you are learning for someone, right? Your gurus, I mean, yeah. present gurus, and also you are contributing to. I think you are also teaching, to the younger generation. So how you're bridging the gap? What is your uh, idea about learning and again then giving it back to the musical community? I would love to be back. Of course, first of all, I think like I'm still learning and I'm not ready enough to teach somebody. But like I'd love to like teach whatever I have learned. So if I can be good for somebody, and so that way, like I'd love to do that. But I must say that more I would be happy if I connect with the learners or the aspiring singers through my performance. For example, I'm a big fan of Pandit Ajay Chakraborty ji and Kaushiki ma'am. And I'm giving the example because everybody know them, and they are performing globally now, and they're performing Hindustani classical music, right? So with their performance, like I haven't met them and I have no connection to them, but I already feel like I mean more close to them, and with their performance, they are successful to connect with me. They're successful to reach my heart and influence my heart to learn more classical music. So I wish that in future, if I can be somebody that I with my performance
somebody would be inspired, and then somebody would take this Hindustani classical music learning point more seriously. So that would be like my biggest achievement. I believe that if I can reach there, that is the biggest reward in my life. Wow. So from the point of view of female artist, how would you define women empowerment? This is a loaded question, I know, but I'm sure you would like to talk something about empowering women through music. Yeah, that's again a good question, I must say. I believe the empowerment exists within uh, women's heart. So, like confidence, the confidence of confidence of kind of win your self-esteem and self-respect, and that is where the women empowerment starts. And today, I see the women are more vocal. They are not like old days. They are not silent, and they are raising their vocal if there is anything unfair to them. And that is, I believe, for me again, I'm proud to say that I'm the only person in my family to come out of India for higher studies. Like I believe I got this empowerment from my family, right? So would I mean it wouldn't have been possible without the support of my family. And I know today not all women are fortunate enough to have this kind of family support or empowerment. But I believe if some women are again kind of bearing some kind of unfairness or some kind of behavior, that is where women need to empower themselves, and that's how it will empower the surrounding. So, yeah. Wow, I think it's very well summarized. You said it very well. So now we are towards the end of the conversation. Of course, the next part is, as I want to summarize for people who have joined a little bit late, that we will be concluding this conversation in about 5 minutes, and then there is a changeover time of about 5 minutes, whereby you can, bring your cup of tea or a coffee, and then you can listen to 4 great numbers which have been, recorded by Nandini specifically for this purpose. Maybe one was played earlier, but the other 3 were not. And out of which there is something very special rendition which you will listen, where Nandini ji has not used any instruments. She has composed everything, even provided the music through some kind of effects. So would you like to say a little bit of that? And then I have got one final question, and then we will go to your professionally recorded performance for this event. That was the music was done by vocal, and that's a song again from Bollywood, Aona from the movie Sathiya, and this is called a cappella cover, where you use your vocal to generate all the elements of music, like the rhythm, the melody, and the other parts. And for that, again, I had to learn how to produce the rhythm first of all, and then there is a sound that is water drop, and that I practiced for about 1 week to get the correct sounds. It's like this is not even proper now, like something like that, and then it will sound like a water drop. And that is something I learned, and then again it's all from YouTube and other learning platforms. And I always try to do something about music with my busy schedule or engineering schedule, and I upload one video each month on my YouTube channel, and each time I try to come up with some new idea. Very interesting. So how would you like to be remembered, say 20, 30, 40 years from now, half a century from now? That's a long time.
What would be your legacy? You know, how would you leave your mark in the music world? Yeah, I wish I'll survive that long. Talking about the corona situation, and of course we are fighting, and we are optimistic that we would come over. Like I would like to be remembered as a good person, like your mother. Wow. Thank you. There is no more dream inside, and then I feel like this is something. If somebody say that, she is a good singer, but she is a nice person. She is good by heart. Wow. So Yeah, that is very what well said. I Very, am very well said. Excellent. Very well said. happy. So, any final thoughts, Sunita ji? Sure. From you? Would you like to sing anything in Bengali Yes. for our audience? Yeah, Sunita ji is right on the money, because Harjit ji also requested that because you said 4 live recordings which will play right now in a professional way. So, but there was no Bengali there. So Harjit ji said, and now Sunita ji is reminding, few lines in Bengali, and then of course the all other 4 songs are in Hindi, and we'll need a 5 minutes, changeover time. Before you start that Bengali song, I would like to thank everyone, and I see Mrs. Padmanavan is joining from Vancouver, who has been, great, ambassador of music, who has given Thank you you, and lots of Anand. artists the opportunity to for a great stage in festival place, and the halls are always full, and that is how we came to know more about you and the rest of the group. So thank you, Sharma Padmanavan ji, and please hold on for 4 more numbers which will be played one after the other. So at this point of time, I would like to say bye to everyone. Hold on for the sitar recital tomorrow morning again. But at this point of time, thank you very much for the best wishes you brought for me. Thank you. I'm really humbled on my birthday here. And thank you, Sunita ji, for joining. I know you're working in the studio for the last 5 or 6 hours. There was no even food for you. Oh, no. So, It's my so pleasure. thank you very much. Send us the food. Come on. And thank you, Harjit ji and Nandini. It is wonderful talking to you. I'm sure everyone will hold on first for your few, about a couple of minutes for a Bengali number, then 4 great recordings which you have done it for our show, which will play it within a 5 minutes interval. So thank you to all. Shubharatri. Take care of yourself. Whenever you get an opportunity, get vaccinated and stay safe. Happy health to everyone of all of you. Thank you. Bye. So Thank Bengali you so song. much. So Bengali song, yeah, I can sing. I can sing with this instrument. I got it recently, and I'm loving it. तो इसको बोलते हैं ukulele. Give me a thumbs up. We'll start from there. कौन सा ये गाना जैसे है? खत्म होगा, give a thumbs up. We'll start from there. Those 4 numbers. So people don't even have to wait. Indranil da, please join with me. गुंजे একে গুঞ্জারণ গানের সুরে পেলাম একা প্রাণের নিমন্ত্রণ আজ গুঞ্জে আমার একে গুঞ্জারণ গানের সুরে পেলাম একা প্রাণের নিমন্ত্রণ আজ গুঞ্জে আমার একে গুঞ্জারণ গানের সুরে পেলাম একা প্রাণের নিমন্ত্রণ সেই ভ্রমণ আমার ফুলে গুনগুনে চায় আমার প্রাণে ঢেউ তুলে গান শুনে যায় সেই ভ্রমণ আমার ফুলে গুনগুনে চায় আমার প্রাণে ঢেউ তুলে গান শুনে যায় অঙ্গে আমার ভাব তরঙ্গে জাগায় শিহরণ গানের সুরে পেলাম একার প্রাণের নিমন্ত্রণ আজ গুঞ্জে আমার একে গুঞ্জারণ গানের সুরে
Wow. दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है थैंक यू Wow, that was wonderful. And just to remind people, first and foremost, that you wear many hats. You played guitar so well. I know. And about 40, 50 years ago, Sunita ji, whichever was a hit music in a Bengali film, that used to be adapted to Hindi movies. So, Pyar Deewana is a great example. Really? First, they Wow. would try it out like S.D. Burman and R.T. Burman. They would try it out in a Bengali movie, and once it is a hit, they will bring And it then, to okay, Hindi it's a sure movies. shot to be a hit in excellent. Yeah, Bollywood then. absolutely. Awesome. So, Harjit ji is all set to start your professional recordings, and we do not even want 5 minutes. You have only 2 minutes if someone wants to warm up the tea. Please hold on for the next 20 minutes for exclusive phone numbers. Sorry, I just want to say one thing. It's not professional recording. It's home recording and it's all by myself. So Oh my God. I call this home recording and I hope you enjoy. Wow. Fantastic. Fantastic. Thank you so much. Thank you so much. Thank for you. having me. Let's listen to the music Yeah, uninterrupted. in just 2 minutes, we'll join on the same page. We'll just end this session now, but we'll join in 2 minutes. Okay, sure.